Well, in this video, we will study about the example number 6.12. We will study about example number 6.12 of NCERT. So, initially, I would like to add this problem. So, this is the question. This is the half part of the statement, and the second part of this is the second part of the statement. So, well, we will go through the statement first, and then we'll think about how to solve this problem. This example is 6.12, slowing down of neutron. So neutron slowing down process in the nuclear reactor, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कैलकुलेशन भी करेंगे और सीखेंगे भी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में बेसिकली होता क्या है. सो एक न्यूक्लियर रिएक्टर में एक न्यूट्रॉन है जो हाई स्पीड से मूव कर रहा है न्यूट्रॉन की ओर. सो इट्स मस्ट बी स्लो डाउन टू ए स्पीड ऑफ 10 to the power 3 meter per second. This high speed is 10 to the power 7 meter per second. It will slow down to a speed of 10 to the power 3 meter per second, so that it can have the high probability of interacting with this 92, this isotope of 92 uranium-235. You have studied in 10th class also. And it causing it to fission. ये इसको उसके बाद तोड़ देता है. हमने ये बताना है कि न्यूट्रॉन कैन लूज मोस्ट पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एन इलास्टिक कोलिजन. सो जो न्यूट्रॉन और ग्रेफाइट रॉड के बीच में जो न्यूट्रॉन का इलास्टिक कोलिजन होता है, हमने ये बताना है कि उसमें से ज़्यादातर एनर्जी को जो न्यूट्रॉन है वो खो देता है. ओके, विद द लाइट स्पीड न्यूक्लियाई लाइक द न्यूट्रॉन, और वो कार्बन की रॉड्स हो सकती है, which has the mass of only few times than the neutron mass. The material making up the light nuclei usually, इसके लिए जो हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो D2 हो सकता है और ये ग्रेफाइट हो सकता है. दिस इज़ कॉल्ड मॉडरेटर, हम इसको कहते हैं. तो अभी तक हमने जो एक्सप्रेशन किए हैं उसमें हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास यदि कोई मास, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसा करें कि आपके पास यदि कोई मास m1 है, इफ़ यू हैव सम मास m1 और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है v1i है, और यहाँ कोई मास है दूसरा m2, वो इनिशियली रेस्ट में है. इट इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट, बट इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड. कोलिजन के बाद उनकी जो वेलोसिटीज़ होती है, जो फर्स्ट मास है उसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 फाइनल, और जो सेकेंड मास है उसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाती है v2 फाइनल. राइट. सो इसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन किया था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में. उसमें हमने देखा था कि जो ये वेलोसिटी है v1 फाइनल, उसका जो एक्सप्रेशन हमारे पास था वो था m1 minus m2 over m1 plus m2, right, in terms of this expression is not in right line, so इसको थोड़ा सीधा करना पड़ेगा. This is v1 final is equal to m1 minus m2 upon m1 plus m2 into b1i. और ये जो फाइनल वेलोसिटी है ऑफ सेकेंड मास b2 फाइनल इज, दिस इज 2m1 b1 i upon m1 plus m2. This is m1 plus m2. These are two very important relation for us to discuss the above said problem. Right. हमने ये देखा था कि हमारे पास एक न्यूट्रॉन जो है वो जो सेकेंड मास है, जो न्यूट्रॉन द फर्स्ट मास में क्या है, न्यूट्रॉन है. इन द फर्स्ट मास देयर इज न्यूट्रॉन. So this is neutron. The second mass, this is neutron. Second mass is neutron, right? So we will just calculate the initial kinetic energy of the neutron is the initial
kinetic energy of neutron. Initial kinetic energy of neutron is this is K1 initial is equal to, this is 1 by 2 mass of the neutron and initial velocity square. And now while the final kinetic energy is, while final kinetic energy is K1 final is equal to 1 by 2 m1 is the mass of the neutron and velocity of the final velocity of the neutron square. So you can use the final velocity of the neutron from here, and you will have this expression 1 by 2 m1 and then is b1 square. तो यहाँ से आप लिख सकते हो mass m1 minus m2 over m1 plus m2 square, and this b1I square. Okay, so this is the final kinetic energy of the neutron. This is final kinetic energy of the neutron. So here on we have to see the fractional loss of kinetic energy is the fractional loss of kinetic energy is, this is F1 which is equal to, अब आप ऐसा करिए इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई 1 कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 1 by 2 m1, this is m1 minus m2 upon m1 plus m2 square into b1I square over 1 by 2 m1 b1I square. So and 1 by 2 m1 b1I. So you are left with m1 minus m2 upon m1 plus m2 whole square. So this is the fractional loss of kinetic energy of the neutron. So while the fractional kinetic energy gained by the moderating nuclei, अब ऐसा होगा कि जो न्यूट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा जब ये न्यूट्रॉन इस ड्यूट्रॉन के बीच में टकराएगा. सो देयर इज द लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन विल शेयर इट्स काइनेटिक एनर्जी. अब हमने स्लो करना है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी की वैल्यू घटना चाहिए, तो वो अपनी एनर्जी जो वो ड्यूट्रॉन के साथ शेयर करेगा. तो हम यहाँ लिखते हैं gain in the fractional gain in kinetic energy, the fractional gain in ऐसे हम कुछ ऐसे बना लेते हैं, the fractional gain in the fractional gain in kinetic energy, the fractional gain in kinetic energy by moderator. Okay, that is D2O here. So this is equal to this is F2 is equal to 1 minus F1, and this is for the case of elastic collision. So especially for the case of elastic collision where there is no other loss. So this is
F2 is equal to 1 minus F1. So F2 is equal to 1 minus F1 is this is M1 minus M2 whole square upon M1 plus M2 whole square. You can solve your 10 plus 1 student. This is easy mathematics. So you will have 4 M1 M2 upon M1 upon M2 square as the final answer. M1 plus M2 whole square is the final answer. So this is the fractional gain in kinetic energy. This is the fractional gain in kinetic energy, and this is the fractional loss in kinetic energy. So I can mark it like this. This is a fractional loss in kinetic energy. So these are all the formulas. These are very, very important formulas. So initial kinetic energy and the final kinetic energy, the fractional loss in kinetic energy. So this part of energy is lost by the neutron. This part of kinetic energy, this part of kinetic energy is lost by the neutron, and this part of kinetic energy is gained by the moderator, right? So we will now proceed toward our the basic problem that is asked from us. So for that sake, you have to go for the another page, and now get ready with this to go to the another page. So here our problem is, now see our problem once again. See, this is the neutron, and this is the neutron, right? So this is the neutron. So this neutron is, you can write neutron as, this is 0 and 1. This neutron you can write as 0 and 1, and this is 1H2. This is 1H2. So it is just single neutron, and this is a neutron and proton, right? So the mass of this neutron is considered as M1. Then M2 is equal to 2 times M1. So now it is a stationary neutron, and now we have to calculate the loss in fractional loss in kinetic energy. So fractional loss in kinetic energy for this formula will be, now this its initial velocity is v1I. So to find the fractional loss, it is independent of the velocity. So F1 is, this is M1, this is M1 minus M2 upon M1 plus M2 whole square. ये वो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी जो न्यूट्रॉन अब लूज करेगा. तो अब आप यहाँ पुट कर सकते हो, M1 की जगह M1 रहेगा, माइनस M2 की जगह 2M1 आ जाएगा. यही प्रॉब्लम नीट में पूछी गई है. दिस इज M1 प्लस 2M1. So and square. So here F1 is equal to this is 1 by 3 whole square, right? So this is 1 by 9. So F1 is 1 by 9. So by F2, that is 1 minus F1. This is 1 minus 1 by 9. That is 8 by 9. You can do it at your own. So this is the amount of kinetic energy lost by the neutron, and this is the amount of energy gained by the moderator. So ये जो ड्यूटरॉन होगा वो 8 by 9 part of this initial kinetic energy को gain कर लेगा, and it will lose the fractional loss is 1 by 9. So this is very interesting. This means it's nearly 90% of this energy is lost by neutron, and this, then you can imagine to what extent it will be slow down. तो कितना स्लो हो जाएगा वो. एक सवाल आपके साथ और किया गया है कि ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ न्यूट्रॉन ना हो, यदि यहाँ कार्बन एटम हो तो कैसा होगा. क्योंकि आप जब स्टेज पर कभी भाषण देते हैं, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है, वहाँ आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, या न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम कभी कभी ड्यूट्रॉन का इस्तेमाल, ड्यूटेरियम का इस्तेमाल करते हैं, और कई बार हम कार्बन और ग्रेफाइट जिसको हम कह सकते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं. सो दूसरे एग्जांपल में हम आपके साथ चर्चा करते हैं कि यदि मान लो आपके पास यहाँ न्यूट्रॉन है और दूसरा जो है वो ग्रेफाइट रॉड्स है. फॉर एग्जांपल यू हैव carbon rods in place to slow down these neutrons. So this is 0 and 1, and this is
6 carbon 12. So here in this case, if you will give this mass as m1, then here m2 is equal to, it is equal to 12 times m1. So you see there is single neutron, and the mass of the neutron and proton is nearly equal. So this atomic weight is 12 times the mass of the neutron. So you can use now this the same formula to find the fractional loss in kinetic energy. The fractional loss in kinetic energy, the fractional loss in kinetic energy, that is F1 is equal to, this is once again the same formula, so you have to substitute just the values. इसमें आप पुट कर दीजिए m1 minus 12 m1 divided by m1 plus 12 m1. So this is square होगा. So f1 is equal to, this is 11 by 13 square, okay, whole square. So this is 121 upon 169. So if you have to find the percentage loss, so आप यहाँ भी लर्न करना हो तो आप यहाँ लर्न कर सकते हैं. F1 में परसेंटेज लॉस कैसे निकालते हैं, आप इसको जरा देखिए. मैं इसको परसेंटेज लॉस निकालने के लिए करूँगा क्या, मैं 1/9 को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 100 से डिवाइड कर देता हूँ. 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 100 मैंने ऐड कर दिए, 100 से डिवाइड करने का मतलब 100 ही निकाल लिए. सो इट विल रिमेन 1/9. सो पर सेंट आप देखिए, पर का मतलब ये डैश हो जाएगा और सेंट का मतलब 100 होता है. तो इसको मैं लिखूँगा 100/9, ये परसेंट का साइन हो जाएगा. सो दिस इज नियरली मोस्ट प्रोबेबली आप इसको लगभग 10% आप कह सकते हैं. सो दिस इज अ परसेंटेज लॉस in percentage loss of kinetic energy by the neutron is 90%, is just 10%, right? Is by 10%. So and for F2, it is F2, it is nearly this is just 8/9, then 100/100, right? This is nearly 90%, right? So it's nearly 90%. Okay, so this is almost 90% of the neutron's energy is transferred to the deuterium, right? So in this case you can see इसका यदि आपने percentage निकालना है तो this is 100/100. So this is nearly 71.6%. So this is per and this is cent. Okay, so F2 is equal to the remaining part of this is 28.4%. So this is all about this problem. So rest is what you will discuss in the higher classes. Now we'll discuss about the collision in 2 dimensions. So well, in this video we will study about the collisions in 2 dimension. So this is the article number 6.12.3. This is the collisions in 2 dimension. Collisions in 2 dimensions. Okay, so to study the collisions in 2 dimension, I would like to draw the diagram, but we have done earlier. So I'll try to refresh your mind with the same diagram once again. So this is what the mass 1 is. This is the first mass m1, and this is the mass which is in state of rest initially, and this is the time of collision. This is the time of collision, and this is the point where the 2 masses will collide with one another. And after collision, this is the horizontal axis,
and after collision the one mass will go in this direction. After collision the one mass will go in this direction and another mass will go in this direction. So this is the xy plane, and this is y-axis. So now with the help of this diagram you can study the collision in two dimensions. This is y-axis and this is x-axis. Okay, so this is the point of mass m1. So this is mass m1, this is mass m2, this is initial velocity of first mass, and this is initial velocity of second mass, which is equal to 0, and this is once again the same mass m1, this is mass m2. So now after collision, it's at the time of collision, and after collision this mass m1 fly off in this direction while making angle theta 1 with respect to x-axis, and a mass m2 will fly off in this direction with this velocity b to final velocity, and mass m2, and this m1 will fly off in this direction with this velocity b1 final velocity. So in two dimensions it has two components. It's x-axis and y-axis. So to discuss about the conservation of linear momentum, we will apply the resolution of the vectors, the concept of resolution of vectors. So see, this momentum of this final momentum of this, I will start with initial momentum. The initial momentum of this particle is m1 b1I. The initial momentum of this second particle is m2 b2I. This part is 0, so we can say it is equal to 0. This is the final momentum of this first particle, and this is the final momentum in xy plane. So but along x-axis this final momentum is m1 b1 phi f into cos theta 1. After resolving the vector, you know about it. This is m2 b2 final cos theta 2, and if you will resolve this vector, this momentum vector along y direction, then it will be m1 b1 final, this is sin theta 1, and along this axis this final momentum is m2 b2 final, this is sin theta 2. So we can say along x-axis along x-axis initial momentum is this part, this is m1 b1I, and final momentum along x-axis is the sum of these two, m1 b1 final cos theta 1 plus m2 b2 final cos theta 2. It is theta 1 and this is theta 2, so here it is theta 2, this is cos theta 2, and along y-axis यहाँ लिख देते हैं हम along y-axis. So the particle is moving along, initially the particle is moving only along x-axis. Okay, so there is no motion along y-axis, so we can say along y-axis the initial momentum is 0, and the final momentum is, this is m1 b1 final sin theta 1 minus m2 b2 final sin theta 2, because it is in the downward direction, so it will be taken as negative, right? So this is all about it.
So now see, the number of variables involved in this are mass, velocity, and theta, mass, two masses, m1, m2, b1 initial and b1 final. So there the number of variables are so much. I mean, I can say these number of variables are initial final velocity of the first particle, final velocity of the second particle, the angle theta 1 and theta 2. So यदि जैसे मान लो इसमें 4 नंबर ऑफ वेरिएबल है तो कम से कम 4 इक्वेशन चाहिए. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस इक्वेशन. सो और यदि हम यहाँ थीटा 1 थीटा 2 को 0 पुट कर दें तो ये मोशन इन वन डायमेंशन हो जाएगा और जो वन डायमेंशनल मोशन के जो सारे रिजल्ट हैं उनको आप दोबारा फिर से क्रिएट कर सकते हो. हम आगे लिखें कि इफ़ फर्दर the collision is elastic. If further the collision is elastic, यदि collision elastic होगा तो हम कह सकते हैं initial kinetic energy, this is m1 b1 initial square is equal to the final kinetic energy, this is m1 b1 final square plus 1 by 2 m2 b2 final square. So this is the rough idea of the collision in 2 dimension. So you can attempt the few problems on the basis of the same if there are any in the exercise. So this is all enough, and rest is what you will study in the higher classes. So we will study about very important problem. This will be very, very interesting for you also. So for that sake, I will add the image of the problem first, and then we will start discussing the same. Okay, most probably this is the problem for us, and this is one thing we have to study about it. So this is very, very interesting problem. यहाँ से लर्न करने के लिए आपको पास बहुत कुछ है. कंसिडर करिए कि कोलिजन, अच्छा इसके लिए फिगर का ज़रूरत पड़ेगा, वो हम आपके साथ फिगर शेयर करते हैं. इस फिगर की उन्होंने बात की है कि इस फिगर के ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम बनाई है, और इसमें बिलियर्ड प्लेयर का एग्जांपल दिया है. इसको भी हम आपके साथ एक इमेज ऐड करते हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आ जाए. ये देखिए, यहाँ से अब आपको चीज़ें आराम से समझ आएंगी. शायद अब इसका साइज जो है ठीक है. ओके, नाउ सी दिस प्रॉब्लम केयरफुली एंड देन वी विल वर्क अपॉन दिस प्रॉब्लम. आपके साथ ये कहा गया कि आप देखिए, कंसिडर करिए कोलिजन इज डिपिक्टेड इन द फिगर 6.10. सो दिस इज द फिगर 6.10. ओके, सो टू बी द 2 बिलियर्ड्स बॉल्स, इस तरीके की 2 बिलियर्ड्स बॉल हैं. जैसे ये मास आपके पास हो गया m1, दिस मास इज m1 एंड दिस मास इज m2, दिस मास इज सम m2. So these 2 balls are of the same size. So the first ball, this ball is called Q, this ball is called Q, and this ball is called target. Okay, so you are hitting this Q to the target, and just to fill this hole, it's called target. And the billiard players wants to sink. बिलियर्ड प्लेयर जो है वो इस बॉल से इस बॉल में धक्का मार के इसको यहाँ डालना चाहता है, राइट. सो सवाल ये है कि बाय द कॉर्नर पॉकेट, सो विच इज़ एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री. ऐसे देखिए, ये कुछ इस तरीके से है. इसको बेसिकली हम यदि इसको एक लाइन में रखें, सो दे आर लाइक दिस, राइट. सो दिस इज विद सर्टेन एंगल 37 डिग्री. So this is at an angle of 37 degree. The question, so assume that the collision is elastic. This means it will follow the conservation of momentum and energy. और फ्रिक्शन और रोटेशनल मोशन जो है, जो बॉल्स के, उनको आपने इम्पोर्टेंस नहीं देना है, उनको कंसिडर नहीं करना है. तो आपके पास एक एंगल दिया है
तो दूसरा एंगल निकालना है। मैंने आपके पास दिया है θ2 इज इक्वल टू 37 डिग्री और यू हैव टू डिटरमिन दिस एंगल। सो मज़ेदार प्रॉब्लम, और देखिए आप कितना, अब हम आसानी से इस प्रॉब्लम को करने की कोशिश करेंगे। देखिए हम यदि कोलिजन इलास्टिक है तो हम इसके ऊपर दोनों प्रिंसिपल लगा सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम सबसे पहले सहारा लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा। तो आप पहले जो फर्स्ट बिलियर्ड बॉल है जो मोशन में रहेगी उसका मास आ जाएगा m1 और उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी v1 इनिशियल, और जो दूसरी बॉल है वो रेस्ट में है तो लिखने का ज़रूरत नहीं क्योंकि उसका मोमेंटम 0 होगा। हमने पहले टेक्स्ट में आपके साथ ये बात डिस्कस कर रखी है, तो बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं। जो फाइनल मोमेंटम होता फर्स्ट बॉल होगा m1 एंड फाइनल वेलोसिटी, और सेकंड बिलियर्ड बॉल का जो फाइनल मोमेंटम होगा मास उसका और ये उसकी फाइनल वेलोसिटी। बट आप यहाँ से देखें कि ये जो m1 जो है दोनों ही बिलियर्ड बॉल जो हैं वो सेम मास की है, तो m1 और m2 दोनों बराबर है, और मान लीजिए उन दोनों का मास m है तो ये m1 जो है वो कॉमन रह जाएगा, तो m लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से आ जाएगा b1i इज इक्वल टू b1 फाइनल प्लस b2 फाइनल। सो यदि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लगाते हैं तो इस प्रॉब्लम पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कुछ इस तरीके से लगेगा, काम करेगा। तो इसी तरीके से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लगा सकते हैं, पर आप इसमें देखिए कि जो काइनेटिक एनर्जी हम यदि पहले पार्टिकल के निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1/2m कॉमन रहेगा, चाहे पहला पार्टिकल हो चाहे दूसरा पार्टिकल हो, और चाहे फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल हो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल हो। तो हमें इस पार्ट को अब डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, हम सीधा लिख देंगे कि ये हमारा जो फार्मूला है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा on the basis of law of conservation of kinetic energy. On the basis of law of conservation of kinetic energy हम कह सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी b1i स्क्वायर, साफ करके लिखते हैं, दिस इज b1i स्क्वायर इज इक्वल टू b1 फाइनल स्क्वायर प्लस b2 फाइनल स्क्वायर। सो इसको आप हम लिखें is it's in the vector form, you can write it like this, b1 final square is equal to vector form because it's a motion in 2 dimensions, so you have to write the vector part of this. So this is a b1 final and plus b2 final. This is a vector, it is in terms of vectors, dot b1 final plus this is b2 final. So this is in vector notation. This is a vector because it is 2 dimensional motion. So अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा b1 a dot a using a dot a is equal to a square. So b1 final into b1 final is b1 final square plus b2 फाइनल इंटू b2 फाइनल इज़ b2 फाइनल स्क्वायर, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके। और आगे आपके पास आ जाएगा a डॉट b, जो a डॉट b इज़ इक्वल टू b डॉट a आ जाएगा, और इसको खोल के आ जाएगा ये a b कॉसीटा और b a कॉसीटा। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 टाइम b1 फाइनल एंड b2 फाइनल. This is cos. Now theta between these two velocities, so they see carefully, this is b1 final and this is b2 final. So now the theta between these two is theta 1 plus 37 degree. So this angle is now theta 1 plus 37 degree. Okay, so what we can say, since the collision is elastic, so both masses are same, as since the collision is elastic
since the collision is elastic, and m1 is equal to m2, so it follows from the conservation of kinetic energy is b1I square is equal to b1 final square plus b2 final square. So if these two parts are same, तो जो सिमिलर क्वांटिटीज होती है वो कैंसिल हो जाएंगी. So you are left with this 2b1 final into b2 final cos theta 1 plus 37 degree, it is equal to 0. So this means that this part is non-zero. This part is non-zero. So here this part is non-zero. 2b1 final into 2b2 final is not equal to 0. This means that this part has to be equal to 0. And how is this possible? If theta 1 plus 37 degree is equal to 90 degree, because cos 90 degree is equal to 0. So we can say theta 1 is equal to 90 degree minus 37 degree. So this is 53 degree. So with this numerical problem, we are going to close this chapter. And if you have any problem, question of any kind, so you can write in the comment box. I will try to answer these questions. Thank you very much.